Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tess Anna Jose and we are doing a grammar portion. We are following language with ease book, right? So last time we have completed almost a large portion of adjectives and descriptive words. So we have a small portion left out. We'll be continuing with that, right? So याद है आपको how we write questions? Questions लिखे थे ना हमने बहुत सारे. Do you remember that? Right. टाइम जब पूछते हैं तो व्हाट डू यू आस्क? यू आस्क व्हेन. जगह पूछते हैं तो यू आस्क वेयर. फिर कौन है पूछने के लिए? हु. कैसे हुआ? हाउ. है ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे ना हमने. सो विल कंटिन्यू विद दैट स्मॉल पोर्शन. चालू करें? चलो. In pairs, ask questions with the question word which, who, what, when, where and how to get the given answer. So here you have been given the answers and you have to write the questions. ठीक है? आपके पास answers दिए हुए हैं. You have to form the questions. हमने ये questions किए हैं ना पहले? याद है? चलो. First one is I live in Borivali. I live in Borivali. आप किसी को आंसर दे रहे हो कि आप बोरीवली में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो. ठीक है? सो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? क्या पूछा होगा? कहाँ रहते हो, है ना? सो इट्स अ प्लेस. दे आर आस्किंग अबाउट प्लेस. सो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है प्लेस के लिए? बताओ जल्दी से. वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू live? I live in Borivali. ठीक है? Next, my mother is a teacher. आपको आपके पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं? क्या पूछेंगे? What does your mother do? या फिर what does your father do? Right? So, what does your mother do? So you will answer, my mother is a teacher. What will you answer? My mother is a teacher. My mother is a housewife. She is a doctor. जो भी हो, ठीक है? So what will be your question? What does your mother do? ठीक है? You can form questions now. Right, चलो. Next. Dash, I am coming to school today. So you are answering someone that yes, you are coming to school today. तो सामने वाले ने क्या पूछा होगा? क्या पूछा होगा? Are you coming to school today? Your answer is क्या? हाँ मैं आज स्कूल आऊँगा. सो क्वेश्चन क्या पूछा होगा? क्या तुम आज स्कूल जाओगे, आओगे? ठीक है? सो हाउ विल योर क्वेश्चन फॉर्म? आर यू कमिंग टू स्कूल टुडे? नाउ नोटिस देयर इज नो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, एनी अदर क्वेश्चन वर्ड. सो क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा भी यू कैन फॉर्म क्वेश्चंस. आर यू, डू यू, ये वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस. ठीक है? जरूरी नहीं है हमेशा व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, व्हाई यही आए. ओके? नेक्स्ट, आई फील वेरी टायर्ड. आई फील वेरी टायर्ड. मैं बहुत थका हुआ हूँ. सो व्हाट वुड बी द क्वेश्चन? हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट विल बी द क्वेश्चन? हाउ आर यू feeling? Done? Okay? Clear hai? So it's not necessary that always you have to use what, when, where, how, why. Your questions can also be formed with are you, do you. Okay? These are also forms in which you can ask questions. Now you can ask questions for simple answers, right? Chalo, moving on to next. In pairs, ask questions with the question words. Same format. ठीक है? We'll again, and your answers are given
and you have to form questions. First is, my father has a red Maruti Suzuki. My father has a red Maruti Suzuki. What is a red Maruti Suzuki? It's a car, right? It's a car. So, सामने वाला क्या पूछा होगा जब आपने आंसर किया कि my father has a red car, Maruti Suzuki? Which car does your father have? Which car does your father have? आपके father के पास कौन सा कार है? तब you will answer the name of the car. है ना? ऐसे करोगे ना? So your question will be, which car does your father have? My father has a red Maruti Suzuki. Okay, is it clear? Did you understand? सामने वाला आपसे क्या पूछा होगा जब आपने आंसर किया कि आपके फादर के पास कौन सी कार है? The question would be, आपके फादर के पास कौन सी कार है? मेरे फादर के पास रेड मारुति सुजुकी है ना? So the question is, which car does your father have? आपके फादर के पास कौन सी कार है? ठीक है? Next, I am sorry I forgot. Now, I am sorry I forgot. Sorry मैं भूल गया. क्या भूल गए? कुछ भी हो सकता है ना? You can write anything you want. So यहाँ पे क्या लिखे? The teacher asks you, have you done your homework? So you forgot and you will say, I am sorry I forgot. ठीक है? So what can be your question? Have you done your homework? Or you had to return a book to your friend. आपके friend को आपको एक book return करनी थी. So your friend asks you, did you bring my book? So you will say, I am sorry I forgot. So it's upon you what question you want to form. ठीक है? आप कोई भी question form कर सकते हो. Here we'll go with the teacher one. ठीक है? So did you do your homework? Question. Did you do your homework? I am sorry I forgot. इसके अलावा what else can you form? Did you bring my book? या फिर did you give milk to dog का नाम क्या रखे? हमने last time क्या dog देखा था? Rover. Did you give milk to Rover? Sorry I forgot. So sorry I forgot means मैं भूल गया. I am sorry. So you can form any question accordingly. ठीक है? Next. Thank you. Thank you. What question must have been asked जिसमें आप answer कर रहे हो? Thank you. Anything. Now यहाँ पे no thank you भी हो सकता है, thank you भी हो सकता है. If I give you something, directly you can say thank you. If otherwise, okay, one is if I give you something, that is simple thank you. Next, I give you something but you don't want it. ठीक है, मैं कुछ दे रही हूँ आपको but आपको नहीं चाहिए. So what will you say? No thank you. ठीक है, thank you can be used as thank you and no thank you. ठीक है? When do you use no thank you? You use no thank you when you do not want something. When you are offered something but you do not want. कोई कुछ दे रहा है आपको but आपको नहीं चाहिए. Right? So यहाँ पे सिर्फ thank you है. What question can you form? What do you say when you receive a gift? What do you say when you get a gift? You say thank you. So what do you say when you get a gift? You say thank you. क्या बोलते हैं? Thank you. Now, do you see you have used two question words here. आपने what भी use किया है, आपने when भी use किया है. ठीक है?
when is used because they are asking the time कि कब बोलते हो, and what is used for asking क्या बोलते हो. Confusing तो नहीं है ना? Okay, next. On top of the cupboard. Now you are answering that on top of the cupboard. Cupboard के ऊपर. So क्या पूछा होगा किसी ने? कोई चीज कहाँ है, राइट? कबर्ड के ऊपर कोई चीज रखी होगी, उसके बारे में पूछा होगा. सो क्या चीज हो सकती है? वेयर इज द कैट, वेयर इज द सूटकेस, वेयर इज द टॉय, कुछ भी, ठीक है. सो वील गो विथ कैट. वेयर इज द कैट? सो योर आंसर इज on top of the cupboard. On top of the cupboard. We have used where because we are asking about a place. हम एक जगह के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ है? So where. Okay. Punctuate the sentence. Plump Mohan is unlike his thin sister Bhavani. Now, sentence starts with a capital. Plump Mohan is a name, so capital. Mohan is unlike his thin sister Bhavani. What does the sentence mean? The sentence means two people, Mohan and Bhavani, brother sister. Mohan is unlike, is not like his thin sister Bhavani. Mohan is plump. Plump means gol matol, mota mota, and his sister is thin. So Mohan is a little bit fat and Bhavani is thin. Unlike means not like. ठीक है? So proper nouns. What are the proper nouns here? Mohan and Bhavani. Why? Because they are names, है ना, and they are written in capital letters. Common noun. What is the common noun here? Sister. Why? Because sister कोई भी हो सकता है ना? It's a common word. Now adjective. You remember what are adjectives? Adjectives are describing words. किसी भी noun को describe करने के लिए जो words use होते हैं, they are called as adjectives. So यहाँ पे what all adjectives do you have? Plump, Mohan and thin sister. मोहन को कैसे डिस्क्राइब किया है? प्लम. एंड सिस्टर को कैसे डिस्क्राइब किया है? थिन. सो डन. what are the proper nouns? Mohan and Bhavani. Common noun sister, adjectives plum and thin. Are you understanding? मैम के साथ साथ लिख रहे हैं? Please keep your textbooks clean, sharpen your pencils and after that write. Okay, next is we have smile. This time we have smile. And how does it go? I smile, we smile, you smile, they smile. And when does it come smiles? He, she and it. Right? Remember? Okay. Did the dancer smile at you? क्या उस डांसर ने आपको देख के स्माइल किया? Now see, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहा है? Did the, what, when, how, where, why नहीं यूज हो रहा है, ठीक है? Yes, she did smile at me and I am so happy because I am her fan. Yes, she did at me and I am very happy because I am her fan. अगर no है तो no, she didn't smile at all because she was upset. Okay, now नो के लिए क्या क्या आंसर दे सकते हैं? नो शी डिड नॉट बिकॉज शी वॉज अपसेट. नो शी डिड नॉट बिकॉज शी डिड नॉट सी मी. नो शी डिड नॉट बिकॉज इट वॉज अ लार्ज क्राउड. कुछ भी, ठीक है? येस या नो के लिए यू कैन गिव डिफरेंट रीजन्स और यू कैन जस्ट सिंपली लीव द सेंटेंस एज येस शी डिड, नो शी डिडंट, है ना? येस शी डिड करके भी आप सेंटेंस छोड़ सकते हैं, नो शी डिडंट करके भी सेंटेंस छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो उसमें रीजन ऐड कर सकते हो. ओके Next, the clever girl put the meon witch into the iron cage. Capital, the clever girl
put the me on which into the iron cage. Now, capital T because the sentence is starting with a sentence starts with a capital letter and full stop. Next, proper noun. Do you have any proper noun in this sentence? Do you have any proper noun? No, you do not have any proper noun. Next is common noun. Do you have common nouns? Yes, you have. Girl. Why? Because girl कोई भी girl हो सकता है. Next, me on which. Which is also common. क्यों? क्योंकि which का कोई specific name नहीं दिया है. Next is cage. Cage is also common. Why? Because cage कोई भी cage हो सकता है ना? Now, adjectives. Do you see? Each noun is given an adjective. हर noun के सामने एक adjective है. You just have to write it as it is. How is the girl? She is clever. How is the girl? She is clever. How was the witch? She was a mean witch. Okay, it's a mean witch. Sorry. Next is cage. How is the cage? Cage क्या होता है? पिंजरा, है ना? Have you seen? ऐसा तो नहीं होता है, but still ऐसे कुछ जिसमें birds को बंद करके रखते हैं ना, that is a cage. और जिसमें animals को बंद करके रखते हैं, that's a cage. So, what material is used for making the cage? Iron. You remember जब हमने adjectives के types किए थे, we have done different type of adjectives, right? Adjectives can be size, shape, color, number and the material that is used. So, यहाँ पे cage कैसे ही बना है? Iron से, right? So, your proper noun, you don't have any proper noun. Common nouns are girls, witch and cage. Adjectives are clever, mean and iron. Okay? Clever, mean and iron. Next is dip. What do you mean by dip? Dip मतलब dip करना, किसी भी liquid में कोई चीज़ को डुबो के निकालना. Have you seen ink pens? उनको आप ink में dip करके निकालते हैं. या फिर जब आप पेंट करते हो ब्रश को वाटर में डिप करते हैं, दैट इज डिपिंग. ठीक है? सो आई डिप, यू डिप, वी डिप, दे डिप एंड डिप्स कब आएगा? ही, शी, इट में. राइट? डिड शी डिप द ब्रेड इन द मिल्क? क्या उसने ब्रेड को मिल्क में डिप किया? येस, शी डिड डिप द ब्रेड इन द मिल्क बिकॉज शी लाइक्स इट दैट वे. येस, शी डिड. व्हाई? बिकॉज शी लाइक्स इट दैट वे. येस के साथ एक रीजन. No, she did not dip the bread in the milk because but she dipped the biscuit in it. Okay. अब उसने bread नहीं dip किया, उसने क्या dip किया? उसने biscuit dip किया. Now, if you don't want to change the product here, you can say, no, she did not dip the bread in the milk because she does not like it. ठीक है? Simple. Right? The foolish jackal ran out of the rice field. The foolish jackal ran out of the rice field. Right? Any proper noun? कोई proper noun है? किसी का name है वहाँ पे किसी जगह या person का? No. So no proper nouns. Common noun? Common noun है ना? Jackal is a common noun. कोई भी jackal हो सकता है. So jackal is the common noun and out of the कहाँ से भागा वो? Rice field में से, है ना? He ran out of the rice field. So what is the common noun here? Field. Right? So he ran out of the field. Now adjectives. कौन से adjectives है?
Now, rice is also common now. अनाज, राइस, चावल, चावल भी तो एक ग्रुप ही है, सो दैट इज ऑल्सो कॉमन नाउन. नाउ एडजेक्टिव, किसी भी चीज को कौन डिफाइन कर रहा है? जैकल को कौन डिफाइन कर रहा है? फूलिश. सो एडजेक्टिव इज फूलिश. हाउ इज द जैकल? ही इज फूलिश. ठीक है. नाउ अगर फील्ड, राइस फील्ड को डिस्क्राइब किया होता कि ड्राई राइस फील्ड या फिर मशी राइस फील्ड, सो एडजेक्टिव मशी या ड्राई हो जाता. ओके, यहाँ पे और कोई एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन नहीं है. ओके, हैव यू डन इट? चलो. आई कम, नेक्स्ट इज कम, आना है ना, आते हैं ना. सो आई कम, वी कम, दे कम, क्या रह गया? यू कम. ठीक है. सो फोर फॉर्म्स फॉर कम सिंगल रहेगा. ही, शी और इट के साथ comes. He comes, she comes, it comes. ठीक है. Will the old plumber come today? क्या प्लम्बर आज आएगा? Now see, प्लम्बर को कैसे डिफाइन किया है? Old. So old is adjective. है ना? Now you know this. Yes, he will definitely come today and repair the leaking tap. Yes, वो जरूर आएगा and tap को repair कर देगा. And if it is a no, then no, he will not come today. He said he will come tomorrow. या फिर no, he is busy today. He won't come today. या फिर no, he said he will not come. ठीक है. So no के साथ भी you can give reasons if you want. Yes के साथ भी you can give reasons if you want. And this is how you form the sentence. ठीक है. No, he will not. And after that a reason. Yes, he will definitely. Then after that a reason. जरूरी नहीं है कि आप definitely use करो. Yes, he will. Yes, he will surely. ऐसे भी रुक सकते. ठीक है. Mona has a heavy suitcase. Mona has a heavy suitcase. Now, proper noun Mona. Why? Because it's a name. It's a person's name. Next, heavy suitcase. किसके बारे में बात हो रही है? Suitcase. Suitcase is common noun. है ना? Now you know how you define common noun and differentiate common and noun and proper noun, right? So suitcase कोई भी suitcase हो सकता है. So common noun suitcase. And how is the suitcase? Suitcase को कैसे define किया है? Heavy. Adjective is heavy. Understood? Done? The proper noun is Mona because it's a name. Heavy is adjective because it describes the suitcase, and suitcase is common noun because it can be any suitcase. Okay? Next is ask. पूछना है ना? I ask, you ask, we ask, they ask. And when does it come asks? He, she or it asks. ठीक है. He, she and it में s वाला form. Did mother ask the children to come home? क्या मम्मा ने बच्चों को घर आने के लिए बोला? Yes, mother did ask the children to come home for dinner. Yes, mother did ask the children. See, जैसे question में है, you just have to answer in the same way. ठीक है. Yes, she did. No, she didn't. ठीक है. No, mother did not ask for the children because it was late. Because it was not late. ठीक है. So it means see, अब यहाँ पे if you are writing not, the sentence changes. अगर not लिखा है तो क्या होगा? मतलब नहीं, मम्मा ने उनको घर आने के लिए नहीं बोला बिकॉज अभी देर नहीं हुई थी, अभी 6 o'clock नहीं हुआ था, सो मम्मा ने नहीं आने के लिए बोला. इफ यू आर नॉट राइटिंग नॉट, ठीक है, देन व्हाट विल इट बी? नो, मदर डिड नॉट आस्क बिकॉज इट वाज लेट. हो सकता है किसी और बच्चे की बात हो रही है, मम्मा ने उनको आने के लिए नहीं बोला बिकॉज लेट हो गया था, 7:30 हो गया था, देन उनको बुलाना ठीक नहीं है. यू सी द डिफरेंस इन द सिचुएशन. दो अलग अलग सिचुएशन के डिफरेंसेस देख रहे हैं. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. चलो. I have 20 unopened boxes of candy in my room. I have
20 unopened boxes of candy in my room. Now, any capital? No. Any proper noun? No. Common nouns. 20 unopened boxes of candy in my room. इसमें कौन कौन से common nouns है? Boxes is common, है ना? Boxes is common, कोई specific box नहीं है. Candy, कोई भी candy हो सकता है. And my room. रूम का कोई मेरा रूम है बट स्टिल कोई नेम तो नहीं है उसका. नाउ एडजेक्टिव्स 20 अनओपन्ड बॉक्सेस. बॉक्सेस को कैसे डिफाइन किया है? फर्स्ट दे हैव गिवन अ नंबर एंड अनओपन्ड, मतलब बॉक्सेस हैं, दे आर नॉट ओपन्ड. एंड कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस, राइट? आई कॉल, कॉल बुलाना, सेम. I call, you call, we call, they call, and when it comes to he, she and it becomes calls. He calls, she calls, it calls. अभी तो I think ये by heart हो गया होगा, right? Next, should we call the teacher to class? Yes, we should call her as everyone is making too much noise. क्या हमें टीचर को क्लास में बुलाना चाहिए? Yes, हमें बुला लेना चाहिए because everyone is making too much noise. या फिर yes, we should because it is her period. Yes, we should because we have a test. Anything. No, let us not call her as she is busy. Let us play the game instead. No, we should not because she is busy. No, we should not because we have not done our homework. No, we should not because she will come by herself. See, no, we should not के बाद कोई भी reason is okay. Yes, we should के बाद कोई भी reason is okay. Okay? I spy with my little eye. Things beginning with P. Now you have some clues. You have to give the word. ठीक है? It is a green bird with a red beak. Green color की कौन सी bird है जिसकी red color की beak है? P A R R O T. Parrot. Okay? It is an animal that runs fast in races. कौन सा animal है जो race में बहुत तेज भागता है? It starts with H. It's a H-O-R-S-E, horse. Okay? It can be blown up and is used for parties. Parties में कौन सी चीज़ है जिसको हम फुला के use करते हैं? B-A-L-L-O-O-N. A balloon, right? It is another name for street. Street मतलब R से शुरू होता है. R-O-A-D. Road, है ना? Road and street is same. Okay, next. We sit on it. S से start होता है. We sit on it. We sit on. It can be seat or a stool. Stool होते हैं ना जिसमें टिकने की चीज़ नहीं होती है. They are round small plastic के stools देखे आपने? देखे होंगे ना? ऐसे होते हैं. These are stools, right? So the green bird with a red beak is parrot. P-A-R-R-O-T. Animal that runs fast in races. Horse. H-O-R-S-E. It can be blown up and is used for parties. Balloon. B-A-L-L-O-O-N. It is another name for a street. R-O-A-D. Road. We sit on it. It can be seat or a stool. Right? Done? So that was your adjective and descriptive words part. I hope आप लोग को now you can make out कि adjective कौन सा है, common noun कौन सा है, proper noun कौन सा है. Proper nouns are names of places or animal. Particular एक name होना चाहिए and they are always written with capital letters.
Then common nouns. Common noun is any noun that is common. उसका कोई specific name नहीं है, and it's never written in capital letter. Adjective, the words that describe the noun. आपके पास जो भी noun है उसके बारे में आपको जो words बता रहे हैं, they are adjectives. So when you write a sentence, you always start with a capital letter and end with a full stop. When you write a question, you always start with a capital letter and end with a question mark. It's not necessary that when you write a question you have to use why, where, when, how. ये हमेशा ये आना ज़रूरी नहीं है. The question can start with did you, do you, are you, is it. Okay, ये words भी use हो सकते हैं. So I hope you've understood and you've done all the exercises along with me. ठीक है? Sharpen your pencils. Please book में hodgepodge नहीं करना. Okay, I will see you next time with a new topic. Till then, take care. Bye bye.